Today we discuss the DNA fingerprinting. Before the DNA fingerprinting, we have discussed some technique and terms for the DNA fingerprinting, because there are different terms in your NCERT book are given in the DNA fingerprinting. These are the repetitive DNA, satellite DNA, microsatellite DNA, mini satellite DNA, VNTR, polymorphism, clear? Mutation. These different terms are given in your syllabus. Southern blotting. So, what will be happen in a DNA fingerprinting? A DNA fingerprinting is a process similar to the tools of the genetic engineering and the mechanism of the genetic engineering. Clear hai? We have discussed the tools of genetic engineering in biotechnology. First we discuss the tools, then technique. Similar is here. First we discuss the terminology of the DNA fingerprinting. These are the tools of the DNA fingerprinting, and then the technique of the DNA fingerprinting. So, firstly we discuss some technique and terms for the DNA fingerprinting. Clear hai? So, these technique and terms, I will start with the first repeated DNA. So, I mention here the DNA, we are mentioning here DNA fingerprinting. Clear? But it is not a DNA fingerprinting, because we have discussed the DNA fingerprinting in a mechanism. So, we can, it is initial stage of DNA fingerprinting, some technique and terms related to DNA fingerprinting. So, we have discussed firstly some technique and terms for the DNA fingerprinting, in which the first one is the repetitive DNA. What is the meaning of the repetitive? Repeat. Repetitive means repeat DNA. Repeated DNA means repeat DNA. So, in a repeat DNA, we can say in repeat DNA, the DNA sequence that repeat in genome. A complete DNA of a cell is known as genome, and in this cell, the repeat DNA is present. That known as the repetitive DNA. Clear? And this sequence does not code protein, and this is not code the protein, any type of protein. Clear? You know very well the eukaryotic cells, eukaryotic genome, we have discussed in a mole bio earlier, and divide two parts, the coding genome and second one is the non-coding genome. Clear? And divide two parts, coding and non-coding part. We are discussing only non-coding part here, and this is the non-coding part. And we have explained here, this is a DNA, if it is a DNA helix like this, and it contains the DNA helix and it contains the coding non-coding sequence, and in this sequence these are the repeated DNA. It means ATGC, ATGC, ATGC. So, in a DNA helix, the nucleotide of different nucleotides number same segment of the nucleotides ATGC is repeated again and again, again. That is known as the repetitive DNA. Clear? Again, and this repeated DNA again two types. Here a group of the different nucleotides and a single nucleotides. Single nucleotide repeated, or a group of the nucleotide repeats. Clear? So, on the behalf of this condition DNA, we are described here the DNA is divided two parts. The first one is the repeated DNA and second one is the non-repetitive DNA. There are two parts. First repeated DNA, second one is the non-repeated DNA. The maximum part is non-repeated DNA, repeated DNA. The maximum part is the non-repeated DNA. Okay. And the repeated DNA known as the tandem repeats and dispersed. They are divided two parts, tandem repeats and dispersed. In tandem repeats, it is known as the DNA polymorphism, and these repeats are responsible for the DNA fingerprinting, the protein, DNA polymorphism, and DNA sequencing and genome mapping. So, these tandem repeats are very important for the any type of the genome mapping, DNA fingerprinting, clear? And these tandem repeats are different than different type of the organism. समझ बात?
इसका मतलब जितने भी लोग हैं उन सबके अंदर टेंडन रिपीट अलग है, इसलिए सबके डीएनए अलग है. So I explained earlier DNA is the blueprint of the any organism, but present time we can say DNA tandem repeat are the blueprint of the any organism. DNA tandem repeat are the blueprint of the any organism because 99% DNA are same in organism. My DNA and your DNA 99% same. My DNA and plant DNA 60-65% same because DNA has a 4 nucleotide A, T, G, C. And the repeated club of these DNA, the arrangement of these nucleotides are different types, and these arrangement are causing the diversity. And this variation is known as the polyform. When a single organism like me, like you, in a same species, the gene are repeated at different conditions, the position of the nucleotides are different types, so that is known as the polymorphism. And this polymorphism is the basis of the DNA fingerprinting, genome mapping and DNA sequencing. Clear? So, it is a DNA polymorphism, repeated DNA polymorphism. And here I explain that this tandem repeat like this, here the A. In this type DNA segment, the A is repeated unit and it is continue repeated. It is a continue repeated. And second one is the dispersed, failover. It means it is a tandem repeats, but here AB, here is single nucleotide A repeat, and here two repeated A, C, A, T, and then AB. So AB is repeat again, A, B, and AB. That is the dispersive. It is not continuous in dispersive form. So there are different type of the repeated DNA, tandems and dispersive, and what the main of the repeated DNA? It means a DNA that represents the repeated units are known as the repetitive DNA. Clear? Okay. So second point, first one is the repeated unit, second point is the satellite DNA. Second one is satellite DNA. We have discussed satellite DNA in mole bio when we discuss the DNA, and then we have discussed the satellite DNA in 11 cytology when we discuss the DNA. You know, satellite DNA, NOR region, those are NOR region 1, 2, 3, 13, 14, 15. So, different type, we are the satellite DNA, DNA that contain the many tandem repeat but not inverted repeats of the short basic repeating unit is known as the satellite DNA. What is the definition of the satellite DNA? DNA that contain the many tandem repeat of short basic repeating unit are known as the tandem repeats, and it is located at very specific spot in the genome. It is clear? This genome, in a genome, the satellite DNA are present in a specific region. So their location is present in an organism is fixed. मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर जो डीएनए होगा, सेटल डीएनए होगा, वो जीनोम में किस जगह है वो फिक्स है. आपकी बॉडी में वो अलग जगह हो सकती है, तीसरी बॉडी में अलग हो सकती है. इन ए कंप्लीट डीएनए द सेपरेशन, द लोकेशन ऑफ द दिस सेटल डीएनए इज डिफर in different organism and different peoples, different individuals. Clear? It is separate. When the DNA is separated from it is separated during the ultracentrifugation. When we centrifuge DNA, we centrifuge the DNA, that means the satellite DNA is separate, and due to the centrifugation, it is divided in two parts. The genomic DNA, complete genome DNA is divided in two parts. A represents the major peak and the second the minor peak. So at the time of the centrifugation, it represents like this. Here it represents the major peak and the minor peak. The major peak is known as genomic DNA, gDNA, genomic DNA, and minor peak is known as the satellite DNA. So I explain here during the centrifugation, the DNA divided two parts, the genomic DNA and the satellite DNA. Clear? It is maximum amount, and these are the tandem. These are the tandem repeats. So it is the repeated DNA.
satellite DNA also repeated DNA. Satellite DNA is type of repeated DNA. ठीक है, repeated DNA is name satellite DNA. And on this is centrifuge and there a major portion occur. This diagram is similar to the Manson-Strauss experiment, DNA semiconductor method, and we centrifuge the DNA. Here new DNA, heavy DNA N15 and 14. Similarly here when we centrifuge the DNA, we obtain these band pattern, and these band pattern the upper side, these are known as the genomic DNA, AT rich, the band upper side AT rich, and is the GC rich. So this is cellular DNA and this one is the genomic DNA. So we obtain a bigger band, peak and a small peak, and a bigger band, a small band. The small band are known as the cellular DNA, they separate for the centrifugation, and bigger is known as the genomic DNA. Clear? So it is the satellite DNA diffusion. Then on the basis of the base length, richness of the nucleotides and number of the nucleotides, the satellite DNA again divided into two types, mini satellite or microsatellite. Microsatellite is a small satellite, microsatellite is a small DNA segment, and mini satellite is a bigger. Clear? Here the satellite DNA in again divided into the two types on the basis of the first base of the composition of nucleotide base of the composition, nitrogen base composition, we can say nitrogen base composition, nitrogen base composition या पूरा देता हूँ, nitrogen base composition, nitrogen base composition, AT rich or GC rich, which one type present? AT, adenine thymine rich, and GC guanidine cytosine rich, that is the base composition. Second, the size of the repeated unit. Size of the repeated means number of the repeated unit. If, for example, here the CA, the repeated unit where the two nucleotides CA, cytosine adenine are required, the two nucleotide size. Clear? Another way, CAAAC, and that means 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. That means sequence 5. So it is known as a 5 base pair, 1, 2, 3, 4, 5, a 2 base pair. The size of the repeated unit. Clear? And length of the repeated unit, and the length, these repeated are in which part of the DNA present, that known as the length of the DNA unit. Clear? In which the DNA, it means that is two nucleotide, a 2 base pair, this is the size, and the length like this. How much time I repeat, that the length. How much time repeat in a single repeated unit, in a repeat, that is the single segment, that known as the length of the repetitive unit. Clear? It is the repeated the length, and it is the known as the nucleotide size. Clear? Second one is these are on the basis of these three main things, they are divided in two parts, microsatellite and mini satellite. Microsatellite and mini satellite. Microsatellite throughout the genome, मतलब microsatellite represent the whole genome. In a complete genome, it represents any type of conditions, but it presents a specific site. पूरे जीनोम हो सकता है, परंतु उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन प्रेजेंट है, उस लोकेशन पे होगा. पूरे जीनोम में होगा, परंतु उसकी लोकेशन पे होगा. ठीक है, ये इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस है. ठीक है, जैसे मैंने कहा ये क्रोमोसोम पूरा मेरा इस पे लोकस है, बहुत सारे लोकस है, परंतु ये इस लोकस पे होगा. दैट इज द थिंग. क्लियर है? तो थ्रू आउट द जीनोम, कंप्लीट जीनोम में पर पर्टिकुलर लोकस पर है. क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन एज STR. इसे क्या बोलते हैं? STR. वाई? बिकॉज इट इज शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट. STR मीन्स शॉर्ट टैंडम रिपीट. It is known as the STR. Length of the repeated DNA 2 to 6 base pair.
how much? 2, and then 4. Maximum 6 base pair. In a repeat, maximum 6 base pair are present. Clear? How many? 6. I represent here 2. When I represent CAAA, that 3. Yeah, CAT, 3. That is 2 base pair to 6 base pair. Clear? And repeated for the 5 to 200 times. In a complete genome, it is repeated about 5 to 200 times. It means जो जीनोम है कंप्लीट मेरे पास सेल के अंदर, उसके अंदर ये 5 से लेकर किसी व्यक्ति में 5 होगा, किसी में 200 टाइम तक रिपीट हो सकता है. तो इट इज़ रेंज ऑफ द रिपीटेशन इज 5 to 200 टाइम्स. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द मिनी सैटेलाइट. ये बड़ा होता है बच्चों, ये स्मॉल है, ये बिगर है. मिनी मतलब छोटा होगा नहीं, माइक्रो छोटा होता है, सूक्ष्म कहते हैं माइक्रो, सूक्ष्म मतलब छोटा. मिनी थोड़ा बड़ा से छोटा, बड़े से छोटा है परंतु मिनी है, मिनी. तो इट इज बिगर साइज, इट इज बिगर एज कंपेयर टू माइक्रो सैटेलाइट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इट प्रेजेंट ओनली एंड ऑफ द जीनोम. एट द एंड ऑफ जीनोम इट प्रेजेंट ओनली एंड ऑफ जीनोम. तो कैसे होगा एंड ऑफ जीनोम? मेरे पास बच्चों ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है. इट इज ए सेल एंड सेल कंटेन न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए हेलिक्स है. एंड डीएनए हेलिक्स कंटेन देयर एंड्स, लास्ट एंड, यहाँ से हुआ वहाँ तक खत्म गया. ये थ्रेड जो मेरे पास है डीएनए हेलिक्स का, उस थ्रेड में फर्स्ट और लास्ट, दी आर द एंड ऑफ द जीनोम. उस पर मिनी सैटेलाइट प्रेजेंट होगा. कहाँ होगा? एंड ऑफ द जीनोम. तो इन क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम क्वेश्चन एम्स लेवल, that is the mini satellite present in which part of the genome? The ends of genome. genome के किनारों पर होता है, end of genome. क्लियर? तो यहाँ पे इस जगह होगा या इस जगह होगा, बीच में नहीं होता है. क्लियर? साइज 10 to 100 बेस पेयर. जिसकी लेंथ होती है उसके अंदर अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? 10 to 100 बेस पेयर होंगे. कितने होंगे? यहाँ तो 2 बेस पेयर थे, यहाँ कितने होंगे? मिनिमम 10, मैक्सिमम 100. तो क्या हुआ? इट इज बिगर देन मैक्सोट्राइड. इसमें कितने थे? 2 to 6. हियर 10 to 100. इट इज बिगर इन साइज. तो ये डोरेंट ऐसा है, बड़ा है. ठीक है? एंड इट इज नोन एज द VNTR. हाँ, सेकेंड इज इट इज नोन एज द VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट. इट इज नोन एज द आल्सो नोन एज द VNTR. एंड इट प्रेजेंट इन द लोकेशन, ऑन द बेसिस लोकेशन. इट प्रेजेंट द about the 1000 location. It present only 2000 time location. It present the 1000 time location. It is a polymorphic. It is a polymorphic. It means in this chromosome the microsatellite present only a single position here, but mesosatellite present all the chromosome any place. So that represent the polymorphism. That represent the polymorphism. मतलब कि एक जो डीएनए रिपीट यूनिट है वो अगर एक ही लोकस पे होती है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में होती है, दैट मीन्स माइक्रो सैटेलाइट. लेकिन वो लोकेशन ना हो, किसी भी लोकेशन में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, दैट इज द मिनी सैटेलाइट. दैट द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मिनी. तो हियर मिनी सैटेलाइट मीन्स द present in the end of the genome, size 10 to 100 base pair, and it is on the VNTR, and minimum 1000 location are present. It means it represent a polymorphic nature, and due to this feature, due to this ability, it is utilized for the DNA fingerprinting. And the basis of the DNA fingerprinting is the VNTR or mini satellite DNA. Mini satellite DNA is not a VNTR, and it is the basis of the DNA fingerprinting. The question in the medical exam, which one is the basis of the DNA fingerprinting? In option, when the VNTR given, the answer is the VNTR, and when VNTR not given, then answer is mini satellite. Okay, because both are the same, mini satellite and VNTR. Clear? Please note it.
Students, we have discussed some techniques and terms for the DNA fingerprinting, and we have discussed repeated DNA, what is the repeated DNA, what is the genomic DNA, what is the satellite DNA, and mini satellite and microsatellite DNA. Clear? Today we discuss next term, that is VNTR. The next term is VNTR. The full form is variable number of tandem repeat. The full form is variable number of tandem repeat. So, what is the variable number of tandem repeats? It means each and organism have a different number of the variable number of tandem repeats, repeated units. So, where it is also known as, you can say it is also known as mini satellite DNA. It is also known as the mini satellite DNA. I explained earlier a total genomic DNA. I again repeat, the total genomic DNA present in a living being, a particular cell. So, in a cell, a total genomic DNA, total DNA is known as genomic DNA. The first term is the genomic DNA. It means in a cell, total DNA that known as the genomic DNA. Clear? Second is bulk DNA, and we can say satellite DNA. I explain again. In a living being, if a cell, like it is a living cell and it contains the nucleus and it contains the DNA, and this DNA is known as the genomic DNA, If it is a DNA, it is DNA, so it is known as the genomic DNA. Clear? And this genomic DNA in a cell, when we isolate from the cell, and then we are centrifuge them. Clear? Density gradient centrifuge. Which type of centrifuge? Density gradient centrifuge. And due to the centrifugation, we can say that the DNA again repeat, and then the cyano DNA, then is the isolated DNA present, and this isolated DNA is then after centrifugation, and it is the density centrifugation, and then the DNA again divided in two parts in a graph. In this one, this is the major peak, and then this is a small peak. This major peak is known as the bulk DNA, and these small peaks are known as the satellite DNA. Clear? I explained earlier. This bulk DNA is common in the all human being. Common in all humans. And this satellite DNA is the present in the different organism. So, we can say the total DNA is 99.9% is the bulk DNA, and 0.1% is the satellite DNA, repetitive DNA. Clear? So, I explained earlier in eukaryotes the DNA is divided two parts, coding and non-coding DNA. So, bulk DNA we can say it is known as the coding DNA. And it is the non-coding DNA. Clear? Coding DNA it means काम का DNA. Non-coding DNA it means बिना काम का DNA. Clear?
when the earlier research that seemed the coding DNA is essential for the inheritance, but it is very important for the particular human being in a particular organism, then coded DNA, and it will express the gene, but the satellite DNA is not present, not working in any type of work. So these satellite DNA are known as the non-coded DNA. So 99.9% is the bulk DNA, is genomic DNA, and 0.1% is known as the satellite DNA. Clear? So this satellite DNA, after that we can say this satellite DNA is important for the further research, for the DNA fingerprinting, in a DNA fingerprinting. The satellite DNA is आलसी DNA. satellite DNA means आलसी DNA, बिना काम DNA होता है. तो बच्चों में यहाँ सिंपली कह सकते हैं एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है. इट मीन्स एक जो व्यक्ति है उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कुछ नया करने की, और एक होता है आलसी. तो आलसी जो होता है वो क्या करता है? आलसी जो होता है वो क्या है, आपने जैसे आप में दो बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ने की इच्छा है जो अलग बुक से पढ़ता है, क्वेश्चन सोल्व करता है. एक ऐसा होता है कि सुबह उठा, खाया पिया, आया, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर सो गया, फिर उठा, फिर खाया पिया, फिर सो गया. देयर टू कंडीशंस हो गई. फर्स्ट जो उठा, पढ़ा आपने, उसको एनालाइज किया, उसको समराइज किया, क्वेश्चंस किए, उसके बाद ये समझा, तो उसने क्या किया, वेरिएशन क्रिएट हुए. इट मीन एक्टिव DNA, वो एक्टिव है. सेकेंड वन इनएक्टिव, जिसका काम कुछ नहीं, लेजी है, दैट इज द इनएक्टिव. सो इनएक्टिव वाला क्या करेगा, रिपीटेशन करेगा, उसकी लाइफ में कोई न्यूली थिंग्स नहीं आएगी. मतलब वो जो इनएक्टिव है उसमें नयापन नहीं आएगा, उसका जो रूटीन है वो चलता रहेगा, ठीक है. कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग कोई वर्क करते हैं, उस वर्क को बार बार रिपीट कर लेते हैं. रिपीटेशन होता है, रिपीटेटिव DNA मतलब रिपीट DNA. व्हाट द मीन रिपीटेशन DNA? रिपीटेटिव DNA मीन्स रिपीट DNA. रिपीट DNA मीन्स एक DNA सेगमेंट रिपीट हो गया एक बार, दो बार. जैसे अगर आपने सुबह से शाम तक 5 बार खाना खाया, तो खाना कितने बार खाया? 5 टाइम. खाना कितने बार खाया आपने? 5 टाइम. तो क्या हुआ? 5 बार रिपीट. खाना कितने बार हो गया? 5 बार रिपीट हो गया. कोई सुबह सोने सो गया, फिर दोपहर में सो गया, फिर शाम को सो गया, फिर रात को सो गया. तो दिन में कितने घंटे सोया? वो 4 बार सो गया, तो 4 बार रिपीटेशन हो गया. स्लीपिंग टाइम कितनी हो गया? 4 टाइम. दैट इज द रिपीट. कोई चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव. तो इन दिस टाइप ऑफ द DNA, इन satellite DNA, द repeats are present. So satellite DNA is a type of the repeated DNA. Repeated DNA is known as satellite DNA. It is known as the repetitive DNA. Known as the repetitive DNA. Clear? Okay. So satellite DNA is a type of the repeated DNA in which the nucleotides, particular segments are repeat, and these repetition and these repeats are different in a different type of the organism. Clear? For example, if I explain here, this is a DNA. Clear? And you know very well we have discussed the particular the exon and intron and eukaryotes, exon and introns. So we have discussed here same thing. If a DNA, if an organism, A, it is an organism a DNA, and here it is the coding DNA, this is the coding DNA, or we can say gene locus. These are gene locus. These are the gene locus, and the coding DNA. It is the coding DNA, a gene. But between the two coding DNA, this is known as the non-coding, and it one is the non-coding DNA. Clear? So the repetitive unit are present in the non-coded DNA. The repetitive unit are present in a non-coded DNA. For example, in this type of the DNA, a sequence present here like this A,
T, G, C, A, T, G, C, then again gene present, then again coding sequence A, T, G, C, A, T, G, C, then gene present, then again coding sequence, non-coding sequence. So here the coding and non-coding are present in alternate form. Coding, non-coding, coding, non-coding. That we can say the coding is present between the two coding, a non-coding present, and between the two non-coding, a coding is present. Between the two non-coding, a coding present, and between the two coding, a non-coding DNA segment present. Clear? And this non-coding are again divided in two types. Again we can say the satellite DNA again divided in two types. First, that is the microsatellite small segment, and second one is the mean satellite. Clear? The length of this DNA, non-coding DNA, is defined in a different type of the organism. The length of this DNA is different type of organism. The number of the nucleotide here are different in a different type of the organism. Clear? The coding sequence is different in different type of the here. So that is the responsible for the DNA fingerprinting. Clear? So I explain here again that this segment of the repeated DNA is non-coding DNA, and this segment, if contain a continuous DNA with the repeated unit, is known as the VNTR, variable number of tandem repeat. Here a word, the tandem. What is the meaning of the tandem? Tandem means sequence. What is the meaning of the tandem? We can say tandem means sequence. Tandem, the word tandem is known as the sequence. It means the repetitive sequence is known as the tandem repeat. Clear? Repetitive sequence is known as a tandem repeat, and it is different in the different chromosome, it is different in the different individual, that is known as the variable. Clear? In human being, the homologous chromosome present, all the homologous chromosomes are present, and these homologous chromosomes are obtained from the father and mother, parental, and each chromosome have different tandem repeats, different type of the VNTRs. The number of VNTRs are differ in different organism. In our my chromosome number first, and is homologous pair, and which one is from the pair, one is chromosome from the father, one is chromosome from the mother. Both have different number of the tandem repeats. Clear? So for example, I give an example. For example, what is the VNTR? I give an example. So I explain VNTR is a mini satellite. Clear? It is separated from by the RA enzyme. It is separated by the RA enzyme. When we are treated with the DNA RA enzyme, the different type of the segment are formed, and these segments are different in length. The copy number of the repeat unit vary from the chromosome to chromosome and individual to individual. For example, in my chromosome, in my body, the chromosome of 1 have the 5 VNTR. How it possible? In my chromosome number 1, the chromosome present in the homologous pair. This is my chromosome number. Clear? It is a chromosome number 1. It is a chromosome number 1, and it is chromosome number 1
clear, of me. And in this chromosome number, 2 chromosomes are present, one for the father and one for mother. Clear? One for the father, maternal and paternal, and this chromosome contain the VNTR 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4. These are the tandem repeats are present, and in mother 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here in father and mother it is variation in tandem repeats and VNTR. In father the repeats number are 4, 1, 2, 3 and 4, and in mother 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means in Y chromosome the number of the VNTRs are differ in a single chromosome, and the 6 plus 4, 10 in chromosome number 1. So I obtain the 4 are from the father and 6 from the mother. So in our myDNA the 4 and 6 VNT are present. When we are isolate the DNA and then we cut the DNA with the help of the RE enzyme, then we obtain the 4 and 6. So we have 2 different length DNA. Due to after the electrophoresis we are obtain the after the treated the RE enzyme we have obtained the 2 different DNA in length. The first one is the 4 and second one is it is bigger in size in the known as the 6, and these band pattern also present in electrophoresis. When we electrophoresis present, then these band patterns obtained at the 6, and then we obtain the 4. Clear? You know very well in electrophoresis we have discussed in electrophoresis a electric gel is present like this, gel present, and this gel contain the well, and when we hear the one chromosome and second chromosome, so band pattern we obtain the one here and second one is here. It means that it represents the 6 and it represents the 4. Clear? Due to their length, those chromosomes contain the maximum length. Here VNTR 6, so length is higher as compared to male chromosome. So we obtain the 2 segment 4 and 6. 6 is the higher and larger segment and a small segment. So we obtain the 6 and 4, and these 2 band 6 and 4 are the blueprint of my chromosome first. Clear? It is the blueprint for my chromosome first. So I have 46 chromosome. So with the help of the 46 chromosome, we obtain these blueprints in electrophoresis, and then we are compare this to another individual, another chromosome, another individual, and we are diagnose, we are identify which one is the character similar from the other organism. So due to the presence of these type of the working, these VNTR, the DNA fingerprinting occur. So in a question, medical exam, the question, which one is the base of the DNA fingerprinting? The answer is the VNTR, the basis of the DNA fingerprinting. Clear? So I explain here 2 things. There are 2 diagram in your NCERT. It is a individual A and it is a individual B. I explain what the VNT are 2 individual. It is individual A, ये कोई एक व्यक्ति है बच्चों, और ये मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति है. ठीक है? क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं पहले हम.
ये कोई एक व्यक्ति ए है, ये बी है, मेरे पास दो व्यक्ति हो गए, ठीक है, एक आप और एक मैं हूँ, ऐसे मान के चलो, एक तो आप और एक मैं हूँ। आप और मैं मुझमें क्या है, ए मैं हूँ, बी आप है, ये तो मैं मी हो गया और ये आप यू हो गए, बस ऐसे मान लो। इंडिविजुअल छोड़ दो आप, तो ऐसे मान लो ये मेरा है, ये आपका डीएनए है। मैंने आपकी एक सेल से डीएनए को आइसोलेट किया, कर लिया, उसको आईएम से कट किया और उसको जेड पे रन कर दिया। ऐसे ही आपका डीएनए लिया मैंने, मेरा डीएनए लिया, सेम ऐसे आपका डीएनए लिया, दोनों का डीएनए लेके हमने क्या किया, उसको आइसोलेट किया, आरएनए से कट किया और जेल पे रन कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने केवल दो क्रोमोसोम लिए, एक क्रोमोसोम नंबर 7 है आपका मेरा और एक क्रोमोसोम 16 है। ऐसे ही मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7 लिया और ये क्रोमोसोम नंबर 16 है। अब आप कहोगे सर ये दो दो कैसे हैं, आपने यहाँ पे दो लिए, यहाँ पे दो लिए, यहाँ पे दो लिए, यहाँ पे लिए। बच्चों ये पेयर है, ये होमोलोगस पेयर है, ये भी होमोलोगस पेयर है, ये भी होमोलोगस पेयर है। ये 7 क्रोमोसोम है, इनमें से ये अपर वाला पेयर है, मान लीजिए फादर से है, लोअर वाला किससे है, मदर से है। ये फादर से है, ये मदर से है। सेम कंडीशन इधर है, इधर ये जो है अपर वाला फादर से है, ये नीचे वाला जो है ये मदर से, किससे है, मदर से है। ये मेरे पास मदर से है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये फादर से है और ये मदर से है। क्योंकि मेरे अंदर बच्चों जो क्रोमोसोम आएंगे, मेरे अंदर जो VNTR आएंगे, किससे आएंगे, फादर और मदर से। सो मेरे पास मेरा क्रोमोसोम नंबर 7 है, ये क्रोमोसोम 7 नंबर बेटा आपका है। दोनों डिफरेंस समझ आ गया। मेरे क्रोमोसोम नंबर में यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, उसमें ये जो दिख रहे हैं मैंने डार्क कर दिए ये वाले, ये मेरे पास क्या है, VNTR रिपीटेड डीएनए। ये क्या है, रिपीटेड डीएनए। तो मेरे पास रिपीटेड डीएनए कितने हैं यहाँ पर, 3, 1 2 3 दिख रहे हैं आपको, कितने हो गए, 3 हो गए। ये 1 है, 2 है, 3 है। तो मैंने कहा मेरे पास कितने हैं यहाँ पर, 3 है। इसमें कितने हैं, नीचे वाले बताइए कितने हैं, ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 2 3 4। ये कितने हो गए, 4। कितने हो गए बच्चों, 4। तो मतलब मेरा जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसमें जो VNTR है, ये रिपीटेड डीएनए जो है, उसकी जो साइट है कितनी है, 3 है। और इस वाले में कितनी है, 4 है फादर वाले में। ठीक है, तो मदर सॉरी फादर वाले में 3 है, मदर में कितनी है, 4 है। तो मेरे अंदर क्रोमोसोम मेरे में ये वेरिएशन है। लेकिन अगर इसी में मेरे ही क्रोमोसोम के 16 नंबर क्रोमोसोम की बात करूँ, कितने नंबर की, 16 नंबर की बात करूँ, क्रोमोसोम नंबर 16 की, तो वेरिएशन कितना है, देखो यहाँ पे हम शो करते हैं वेरिएशन को। ये कितना है, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th और ये 7। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितने हैं, सॉरी 1 2 3 4 5, ये कितने हैं, 5 और यहाँ कितने हैं, 7। सो मेरे अंदर जो डीएनए है उसका क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, उसमें कितने हैं, क्रोमोसोम नंबर मेरा 7 है, क्रोमोसोम नंबर 7 है, उसमें कितने VNTR है, 3। और मुझे मदर से मिले कितने हैं, 4। क्लियर। व्हेन वी कट द RE एंजाइम, जब मैं RE एंजाइम से इसको कट करूँगा, मान लीजिए मेरे पास RE एंजाइम है, इसने इसको डीएनए को यहाँ से कट कर दिया, तो मेरे पास बच्चों जो सेगमेंट मिले कैसे मिलेंगे, दो अलग साइज के मिलेंगे ना। एक सेगमेंट ये मिलेगा, एक सेगमेंट ये मिलेगा। एक में 3 VNTR होंगे, एक में 4 VNTR होंगे। तो डिफरेंट लेंथ के दो मेरे पास मिलेंगे, नहीं मिलेंगे सेगमेंट। इनमें जो नंबर है वो क्या है, रिपीट नंबर। ठीक है, ये 1 रिपीट, सेकंड रिपीट, थर्ड रिपीट, ये रिपीट नंबर है। और टोटल जो लेंथ है इसकी, दैट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए, वो डीएनए की लेंथ है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही अगर मेरे पास क्रोमोसोम 16 लिया मेरा, उसमें कितने हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। एंड देन वी कट द RE एंजाइम हेयर, RE एंजाइम कट, इट द RE एंजाइम, यदि कट करेगा यहाँ से तो यहाँ पे 5 सेगमेंट होंगे और ये
7 सेगमेंट होंगे, कट होंगे कि नहीं होंगे? सो वी ऑब्टेन दीज सेगमेंट्स, वी ऑब्टेन दीज सेगमेंट्स इन माई DNA. Clear? So my DNA, the VNTR, the segment are repeated with the 3 and 4 in the chromosome 7, and in chromosome 16 the 5 and 7. Why we have utilized this 7 and 16? Because we in your NCERT for the human being these chromosomes are given 7, 13 and 16, and it was a U, same chromosome of U, 7 number and 16 number, but here your DNA, when we discuss here, your VNTR 1, 2, 3, 4 and 5. How many? 5. And this one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear? In my chromosome, chromosome number 7, chromosome 7 divided 2 part, which one figure, that are 3 and 4, 3 and 4, and in chromosome number 16, chromosome 16, the 5 and 7, it is my VNTR. In your VNTR 5 and 7, in the chromosome number 7, and 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 repetition, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clear? The same. So here 9 and 9, both the same. So in you, the chromosome contain chromosome number 7, 5 and 7, and chromosome 9 is contain the 9 and 9. So chromosome number 16 is contain the 9 and 9. It is the chromosome number 7 and then chromosome number 16. Clear? तो बच्चों एक चीज़ बताओ मुझे, चाहे ये डायग्राम हो चाहे इधर ये डायग्राम हो, क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या आया? ये मैंने क्या क्या बना दिया? मैंने कहा भाई मेरा एक क्रोमोसोम 1 नंबर है, या आपका एक क्रोमोसोम 1 नंबर है, मेरा क्रोमोसोम नंबर 7 नंबर है, चाहे आपका क्रोमोसोम 7 नंबर है, यहाँ नंबर का नहीं पड़ रहा, कोई से क्रोमोसोम ले लीजिए, मेरे हर एक क्रोमोसोम मतलब मेरी बॉडी में कितने हैं? 23 पेयर्स, 22 ऑटोसोम, 23 वाला एलोसोम, पता है ना, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेरे पास जो 22 ऑटोसोम्स हैं, these are the homologous. These 22 pairs, and each pair is contain a 2 type of the chromosome. One is from the father and one from the mother. Each pair of the chromosome contain the 2. Each pair of the chromosome contain 2 chromosomes. So the chromosome number 7 and of me and chromosome number 7 of you, आपका क्रोमोसोम 7 नंबर, मेरा क्रोमोसोम नंबर 7 नंबर, दोनों को मैंने यदि आइसोलेट किया, उसको मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया आरई एंजाइम से कट करने के बाद, तो दोनों के अंदर 2 बैंड मिली मेरे को। क्यों? मेरे अंदर जो बैंड मिलेंगी 2 बैंड, वो होंगी एक छोटी बैंड एक बड़ी बैंड। क्रोमोसोम नंबर 7 की जो छोटी बैंड होगी वो कहाँ पे होगी? मैंने कहा अभी 4 पे, यहाँ पे मेरे पास क्या था 4 पे 3, वो किस पे होगी? 3 पे। बड़ी वाली बैंड कहाँ होगी? 4 पे।
ऐसे ही यहाँ पे जो मैंने कहा आपके अंदर जो होगी 5 और 7, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था आपको, बड़ी ये एक्सपेरिमेंट बताया था अभी आपको कि ये मेरे पास मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, इस क्रोमोसोम के अंदर मेरे पास ये बैंड पैटर्न है, ये दोनों मेल फीमेल हैं। मैंने जब इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो क्या हुआ कि मेरे पास 2 बैंड प्राप्त हुई ऐसे इस जेल के अंदर। ये कौन सा है, जेल। इस जेल में एक छोटी और एक बड़ी, छोटी 4 है, बड़ी 6 है, मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है। ऐसे ही मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 7 है, ऐसे ही मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 16 है। सो ईच chromosome, each pair of the chromosome are contain the different number of an individual। मेरी बॉडी के अंदर 22 क्रोमोसोम्स हैं और 22 क्रोमोसोम्स जो है पेयर है, ऑटोसोम्स पेयर है, उसमें ईच एंड एवरी वन क्रोमोसोम, ईच एंड एवरी क्रोमोसोम, इसमें आउट ऑफ द 44 जो क्रोमोसोम्स हैं, ईच एंड एवरी वन क्रोमोसोम हैव अ डिफरेंट VNTR। क्लियर। 44 क्रोमोसोम है, टोटल 46 है, तो 46 के 46 क्रोमोसोम हैं, उनके अंदर डिफरेंट VNTR है। तो एक पेयर के अंदर भी डिफरेंट होंगे नहीं होंगे, इधर डिफरेंट है यहाँ पे 3 और 4। सो आप सोचिए बच्चों, मेरी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसके अंदर वेरिएशन है। आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसका वेरिएशन है। मेरी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 7 है, उसमें जो वेरिएशन है VNTR का। आपकी बॉडी में जो वेरिएशन है क्रोमोसोम नंबर 7 है, उसका जो वेरिएशन है वो अलग है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट वे नंबर ऑफ द VNTR इन ए क्रोमोसोम, मेरे 44 क्रोमोसोम्स हैं, 46 उसमें अलग है, आपके में अलग है। That is known as the repetitive. Why it is known as a variable number? Because each and every organism have the different number of these repetitive DNA or repetitive sequence of the DNA or tandem repeat of the sequence. Clear? So it is known as the VNTR, variable number of tandem repeats. Variable number means each and living organism have different number of these repeats. First, ये 2 डिफरेंस ऑर्गेनिज्म का है। एंड सेम ऑर्गेनिज्म, मैं अकेले की बात करूं तो भी गड़बड़ है। वो कैसे? इन माई DNA ईच क्रोमोसोम हैव डिफरेंट आइडेंटिटी नंबर। इन माई DNA ईच क्रोमोसोम हैव डिफरेंट DNA नंबर, डिफरेंट VNTR नंबर्स। हर क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम में हर एक क्रोमोसोम जो होगा वो डिफरेंट नंबर रखेगा। 44 मेरे पास ऑटोसोम है, दीज 44 ऑटोसोम्स जो होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स, दीज 44 क्रोमोसोम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ द VNTR। क्लियर है? बात समझ आ गई? जैसे मैंने कहा था, मेरे पास एक DNA है, इस DNA के अंदर 2 तरह के होते हैं। एक कोडिंग DNA होता है जिसे बोलते हैं जीन, तो ये तो क्या कहलाएगा बच्चों, जीन कहलाएगा। और इन जीन के बीच में ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, नॉर्मल DNA, इसे कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं जंक DNA। जंक DNA क्या होता है? जंक होता है कूड़ा कागज। क्या होता है? कूड़ा कागज। जंक फूड होते हैं ना, जो खाने नुकसान करते हैं बिना काम का, जो काम का नहीं है, तो ये जंक फूड है। ये कैसा है? कोडिंग है, जीन है जो पर्टिकुलर वर्क करता है, ये कोई वर्क नहीं करता है, तो जंक है। एंड इस जंक के अंदर सीक्वेंस होते हैं, जैसे यहाँ मैंने कहा ATGC, तो ATGC आर रिपीटेड 2 टाइम, कितने टाइम रिपीट हुआ? 2 टाइम। ATGC आर रिपीटेड है ना 2 टाइम, तो सेम सीक्वेंस रिपीट 2 टाइम, फर्स्ट एंड सेकेंड, here 2 टाइम। सो इन my DNA, chromosome first DNA, if the ATGC are repeated 2 times, but in your DNA, ATGC are repeated as the 4 times. In another person, 5 times, another person 8 times, another person 2 times, 1 time. तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो VNTR है
रिपीटेड यूनिट्स होती हैं वो सब में अलग अलग है हर क्रोमोसोम पर, and that is the main reason of the variation, and due to this variation we utilize the DNA fingerprinting. अब आप एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे बच्चों, पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है, एक वर्ड होता है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, ये जो सीक्वेंस चेंज हो रहा है सभी के अंदर सीक्वेंस चेंज हो रहा है उसमें उस डीएनए की लेंथ, नंबर ऑफ द कॉपीज और AT and GC रिचनेस, कि उस डीएनए के अंदर रिपीटेड डीएनए के अंदर किसकी मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा है, A की या T की या G या C की, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द नाइट्रोजन बेस प्रेजेंस ATGC और AT and GC it divided two types, AT rich और GC rich. Satellite DNA divided two types, AT rich और GC rich DNA. Clear? So what is the VNTR? You know very well what is the VNTR, mini satellite and satellite. So here we again explain this satellite DNA. This satellite DNA is divided in two times. Again it is divided into two types. The repeated DNA or satellite DNA is divided into two types on the basis of three bases. They are divided two types. Which one? Micro satellite DNA and mini satellite DNA. It is known as the STR. It is known as the VNTRs. STR, it means STR means short tandem repeat. So it is known as the STR means short tandem repeat. And it is the VNTR, variable number of tandem repeat. So this is required for DNA required for the DNA fingerprinting. So each and every organism, the mini satellite DNA are differ in size and shape. So it is the basis of the which one? It is the basis of the which one? DNA fingerprinting. It is required for the DNA fingerprinting. So in your question paper, what is the basis of the DNA fingerprinting? The answer is the VNTR. If the VNTR not given, then the mini satellite, the answer is the mini satellite, because mini satellite is also known as the VNTR. Clear? It is a micro. Micro means short, chota. So the length of this VNTR is 1 to 8 base pair, and here in mini is bigger than the micro, so 10 to 6 to 60 base pair. It is the length. How many nuclei are present in repeated unit? Here the repeated unit is the 1 to 8, like as we can explain here like this: A. That is the 1. This is the 1 nucleotide are repeat in the 1. That is the A. And when the A, T, C, they are the 6. Then repeat the A, T, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many nucleotides? 6 nucleotides. So 1 base pair, 2 base pair, 3, 4, 5, 6. How many? 6 base pair are repeat. Clear? So on the basis of nucleotide, we are given the base pair number, the 1 to 8 base pair. So it is known as a small segment, so known as short tandem repeats. Here the 10 to 60 base pairs are present. So we can say it is the large size of the tandem repeat. Clear?
So, that is the complete about the V and TR. What is the V and TR? What is the luminous satellite? How we are differentiate the V and TR? Clear? V and TR are obtained. We had seen the V and TR in the electrophoresis during the electrophoresis with the help of the treated with the UV rays and ultraviolet rays and ABR dye and ultraviolet rays. Clear? So, that is the complete about the V and TR. Clear? So, please note it. I hope you understand very well.